अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 दोबारा ये डेवलप हुआ था, इसके अंदर थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स आए थे. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द 1786. इन 1786 वेरी फेमस लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके, इनके बारे में आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे. ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया. दैट ही वाज बीइंग गिवन during that time period. The Cornwallis was having a very good established career into the UK also. Britain में the Cornwallis has served with the Queen also. Okay, so he was being appointed by them into the India and he became the Governor General. He is known for having instituted land, judiciary, administrative reforms and the reorganized the British Army and administration. British Army को reorganization कैसे कर सके, क्योंकि he was a commander in chief into the India. Okay, commander of the forces. तो British Army को he had a demand the power of the Governor General be enlarged to the employ special cases to override the majority in council and act of the special responsibility. These were some things that were being said by him. इनको ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, जितना रिक्वायरमेंट है हमारा सिविल सर्विस का उतना ही पढ़ेंगे हम. इसके अंदर ये भी कहा जाता है जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जो कॉर्नवालिस थे, he has introduced maximum changes into the India. Okay, हालांकि जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसके अंदर तो इतने चेंजेस नहीं ला पाए थे ये, बट हाँ काफी सारी जो गवर्नर जनरल की पावर्स थी उनको इन्होंने चेंज करवाया था. द एक्ट ऑफ वर एनेक्टेड टू गिव हिम द पावर ऑफ वर्किंग एज गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ. ये इन्होंने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया था कि जो 1786 का अमेंडिंग एक्ट ही दिस वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. व्हाई इट वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड? दैट ही बिकेम द टू पावर्स, वन इज द गवर्नर जनरल एंड सेकंड इज द कमांडर. Thus by 78 Cornwallis became the first effective ruler of British India under the authority of Board of Control and the Court of Directors. Okay.